बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद चोटानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली एक नहीं बल्कि 5 ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करने लगा हूँ जो कि मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी वो बातें शेयर की जाएं। और उसकी वजह यह है कि इनसे मैंने बहुत सीखा है, इन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करके, इनको इम्प्लीमेंट करके अपने डिसीजंस में, अपनी थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, अपने बिहेवियर में, अपने इमोशंस में। जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एक्सेप्टेंस, आई गेस, आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ योर लाइफ। कि जी आप किसी चीज के पीछे कितनी ही मेहनत कर लें, समटाइम्स इन सम पार्ट ऑफ योर लाइफ द आउटकम्स विल नॉट बी गोइंग इन योर वे, या उसके जो रिजल्ट्स होंगे दे मे नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू बी। सो यू हैव टू start to accept things the way they are. So and you have to be emotionally tuned with the results that may come as a result of your decisions that you'll take. And sometimes वो results जो हैं वो शायद आपके बहुत खिलाफ होंगे। आपको उसको accept करना चाहिए, आपको उसको accept करना होगा। And you have to learn to accept things the way they are. Sometimes you just can't do anything about some part of your life. That could be your health, that could be your relationships, that could be your friends, that could be your sibling, your career. You may be very hardworking, you have a very good intention at times, but some things will go wrong and some things will go right, of course. So you'll have to start to accept things if you want to be emotionally intact. अगर आप जज्बाती तौर पे बैलेंस्ड रहना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपको एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट टेक्स अ बिग हार्ट टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर, एंड दैट्स one of the quality that makes someone very very tough and ready for success, ready for something big that's coming your way. And that's going to amaze you, and you'll realize कि जी कितना एक्सेप्टेंस ने, चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत ने आपको कितना नवाजा है। बहुत सारे लोगों को आज जो कुछ उनके पास है वो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह से, सलाहियत की वजह से, कि जी एक्सेप्ट करना है। इवन चेंज इन लाइफ, इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव टू समटाइम्स एक्सेप्ट थिंग्स विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ। और बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे और ये कहेंगे कि हमने जिंदगी के अंदर एक ऐसे फेज से हम गुजरे हैं जिसमें हमने उन हालात को एक्सेप्ट किया जो शायद बहुत फेवरेबल नहीं थे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने की वजह से आज हम जहां हैं वो मुकाम हमें आज हासिल हुआ है एक्सेप्टेंस की वजह से, बर्दाश्त करने की वजह से, चीज़ों को टेकअप करने की वजह से, समझने की वजह से, रियलाइज करने की वजह से। So that's the number one and the key thing that I believe that's important. Number 2, that's another very important factor, and that is to have a virtue. देखिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपको आपके behaviors को, आपके patterns को, आपके thoughts को, आपके beliefs को वो challenge करेंगे, and they'll be and sometimes you just have no power over those people, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। बट हैव सम मोरालिटी, अपने मॉरल्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को इंटैक्ट रखना, अपने जो आपके द वे यू लुक एट थिंग्स थ्रू अ पर्सपेक्टिव, थ्रू अ लेंस दैट यू हैव बिल्ट ओवर टाइम, आप उसको इंटैक्ट रखें। आई एम नॉट सेइंग कि आप इग्नोरेंट हो जाएं, but whenever you see that someone is trying to push you down or someone is trying to dictate you on the basis of their moral thoughts, their moral lens, then you have to put it put a full stop on that, and you have to really somehow come out of that zone
कि किसी तरह आप उसमें से निकलें, और आपको लोगों को अलाउ नहीं करना कि आप अपने मॉरल वैल्यूज और आप अपनी जो आपकी एक आपका एक स्टैंडर्ड है आप उससे हट जाएं. सो आप अपने मॉरल वैल्यूज को जरूर आप इंटैक्ट रखें, अपनी वर्च्यूज को जरूर इंटैक्ट रखें, अपने अपने फेथ को जरूर इंटैक्ट रखें. जिन बिलीव्स पे आप स्टैंड करते हैं, डू नॉट लेट पीपल shake those beliefs. If those beliefs are really serving you, for that matter. Some people will try to help you. बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे, आपके beliefs को challenge करेंगे. Some beliefs which are limiting beliefs, definitely that has to be challenged. But virtue is somewhat really, close to a person. If you believe that something is serving you, then do not let anyone, ruin that for you at any cost. So that's number 2. Have a virtue for yourself. So acceptance, virtue. Number 3, impermanence. That's another very, very important point, and that's I think we at times we forget when we're in a bad shape, when we're in a good shape. Sometimes we just forget about when we were facing bad times, we forget that there were good times. When we are in good times, we forget that there could even be bad times. So we somewhat we get lost in that emotion, that feeling कि जी चीजें चेंज नहीं होंगी. I mean इंसान हर लम्हा चेंज हो रहा है. Change is inevitable. आप चेंज को होने से नहीं रोक सकते. Change is the only permanent we say, कि जो के होकर रहेगा. So nothing is impermanent. कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो के जो के परमानेंट हो. Everything is impermanent. Everything has to change because the time is changing. The time is not permanent. So as you grow, as you get as you mature, things change as per that, and you have to look at it. और ये चीजें चेंज होने के लिए होती हैं. अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है इंसान के लिए, और इन सब से सीखना होता है. So number 4 is going to be, I think one of the very key thing is to never lose your inner patience, or I'd say inner peace. Very, very important. बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे लम्हात जिंदगी में ना हम सिर्फ उसको इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते because we somehow get lost in some kind of rush of emotions for some reason. कुछ वजूहात की वजह से कोई एक ऐसा मौका आया आपकी जिंदगी में जब आप बहुत खुश हैं, और एक छोटा सा मौका, एक छोटी सी बात कुछ ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका इनर पीस somewhat it ruins that happy moment for you. आपकी जिंदगी का वो खुशी का जो लम्हा होता है ना, वो उसको तबाह करके रख देता है. वो छोटा सा एक इंस्टेंस. सो यू नीड टू बी वेरी थॉटफुल and watchful and mindful of all such small things that basically ruins your good moments. So having emotional control, it's essential. It's very, very essential. So look for yourself. आप देखें कि आपके कौन से ऐसे मौकों पर आप अपने इमोशनल कंट्रोल को लूज कर जाते हो. और आई थिंक इट वर्क really well for me कि if you consciously put some focus on having greater emotional control, चाहे वो अच्छा मौका है या कोई कोई मुश्किल मौका है जिंदगी का, आप अपने इमोशनल फोकस को लूज ना करें. हैव अ वेरी कॉन्शियस थॉट अबाउट इट. सोचें इसको लेके कि कब मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूं और कब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं. एंड इन दोज एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस वी टेंड टू मेक bad choices, and those bad choices sometimes are not the right choices. So just look at it. Inner peace, अपने inner peace को find out करें. And the last one, I could not recall it. I think that's the beauty. You just not everything is perfect. I think I'll just say that imperfectionism. You just can't make everything to be very, very perfect. Don't find perfection in anything. And I think that's the beauty of me forgetting something. So let's make it the 5th point.
So I think that's how it is going to work. So first one is acceptance. Second one is going to be your virtue, have your standards. Third one is going to be impermanence. Everything is going to be, impermanent. Nothing's going to stay for a long time. I mean, you are old, you're young. One day you're young, you tend to grow old. Impermanent. Everything is impermanent. Number 4 was inner peace. Find out your inner peace. And number 5th, as we said, that nothing has to be perfect. You tend to not work the best sometimes. Someday you're not feeling well, and that's okay. Another day you'll try. No worries. दिन आएंगे और आपको मौके भी मिलते जाएंगे जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए. So just don't be too hard on yourself. Just don't be too pushy about yourself and about your success. If something is meant for you, you're going towards that. Somehow the doors are going to open. Just don't be too hard on yourself. So that's about it. That's the 5 things, 5 principles that I feel have worked for me, and I think they've been with me in my difficult times, in my good times, and I've learned so much from that. And I could not emphasize enough about these 5 virtues, these 5 points, 5 principles. So hoping you all the best and wishing you all the best. एंड इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक और वीडियो में. वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा. इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग, कमेंट बिलो. एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक और वीडियो में. जब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.